गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग स्लीपिंग मोड में हैं। So our today's speaker is Dr. Robin Tiwari sir, and he is MD, and company name is Research Tech India. So he is having very vast knowledge about this field. Our MD is going on VLSI technology. So his today's topic is in-house chip design. So I think everyone has to listen carefully whatever he is going to deliver in today's topic, and please make the session more interactive. Ask many doubts, questions, whatever is coming in your mind, and please, all are requesting once again, please listen whole lecture whatever he is delivering. Okay. So thank you. And first, please give a big clap for sir. Thank you for all. Sir, please come and start your thing. Okay, so very good evening to all of you. So the today's topic is in-house chip design. Okay. So we are aware about the chips. I think you also aware about the chips. Some expert lecture already taken for the last 3-4 days. So I think the basic idea you have already. Now, so if you talk about the chip design, so the top 10 countries which deal the vast amount of the chip design. So the first one is Taiwan, then the United States, South Korea, China, Japan, Netherlands, Germany, Singapore, and obviously India is also in this list. The 10th position. So why India is this? In the chip designing, there are the different parts, like the chip process, algorithm coding, circuit making, synthesizing, and testing, manufacturing, fabrication, packaging. So some of the parts done by India, some of the parts import, like the raw material imported from other countries. For the manufacturing, we send our designs, our intellectual integrated circuits to the other countries for the fabrication purpose. So some were done in the India and some were done in the other countries. Okay, so basically what is chip? So chip is a chip. There are the tiny electronic circuits. There are the number of transistors. There are the number of gates. So basically we can say that the chip is the brain of any electronic device. A modern chip can have more than 10 billion approximate gates. So can you imagine the size of one gate or the size of the one chip? You know, the size of chip is approximately the size of the nail, and the size of gate is approximately looking like a virus, invisible virus. So the last line is also very important. You can see the chip inside a smartphone is more powerful than the computer which for the first moon landing. The first moon landing is happened at that time the process key. So the current smartphone we are using, that is much faster than that time of that particular process, which is landing for the moon. So when we talk about the chip design, so the most important thing is the material. Even chip design करना है, but where we design the chip, हम कहाँ पर chip design करेंगे, किस material पे करेंगे. So there are the semiconductor materials. Semiconductors where like it's a state between the conductor and the insulators.
So the semiconductor, the general semiconductor, that is the silicon. Silicon Valley, I think आपने नाम सुना होगा. Silicon Valley, America में, USA में. Why that's called the Silicon Valley? Because there are so many of the companies for the chip design. जैसे in India, जो Bangalore में हम कहते हैं Bangalore is a technical capital. So why the technical capital? Because there are so many of the technical companies in the India. Similarly, in the Silicon Valley, there are so many of the chip designing, manufacturing, the entire process in the Silicon Valley. So what is silicon? Silicon basically it is a material. It gets from the sand. Sand से we extract the silicon. So it's a very lengthy process. It's a very costly process. If you talk about the sand, so mostly continuous sand in area also there are so many of the sands. But the sand से how we extract the silicon, how we convert that sand into the silicon. It's a very complex process. Complex as well as the time consuming as well as the cost effective. Like sand से silicon बनने में 2-3 years से लेके 4-5 years तक का टाइम लगता है. So it's a very time consuming process. And the machines which is also very costly क्योंकि सारी जो मशीन है आइटम चाइना, जापान, यूएसए से ही हमें एक्सपोर्ट करना होता है. इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जिनको ये चीज़ें पता है कैसे करना है, so skills is also very less. So there are one small video, 2-3 minutes, which discuss about the silicon and the semiconductor. So there's a Korean product that ranked #1 in the global export market for 5 consecutive years. We come across the news about it quite often too. Behold, the star is semiconductor. So, let's look into what a semiconductor is. By definition, a semiconductor refers to a material that sits between the conductor and an insulator. Conductors such as gold, copper, iron, and aluminum are materials that allow electricity to flow. Insulators such as rubber, plastic, wood, and diamonds resist electricity, meaning that in an insulator, electric current cannot flow. Semiconductors fall in between the two, which means that semiconductors sometimes have electrical conductivity and sometimes don't. Let's take love as an example. You normally don't feel anything towards other people, but when you meet someone that you have a crush on, your heart starts pounding. Let's put semiconductors in this scenario. When the impure substance called love comes to you, an insulator in this case, your heart starts to pound and you're activated by the substance. Similarly, by artificially adding impurities into a semiconductor, you can control the flow of current. Then, how is a semiconductor created? The starting point is an element called silicon. Does the term silicon sound familiar? Yes, you are correct. Silicon Valley, the high-tech IT research complex in the U.S. The name of this place came from silicon, an element in semiconductors. Silicon does not only represent the element, but also symbolically represents the high-tech industry. Returning to our main point, silicon is also the 14th element of the periodic table, just below carbon. It's easily found in sand, soil, or rocks, and it makes up almost 28% of the Earth's crust. Being the second most abundant element after oxygen, it is a special material and also a very common material at the same time. Silicon crystal has low electric conductivity and high resistance. Therefore, by adding impurities into it, you can make it have or not have current flow. Then, why is the presence or absence of electrical conductivity important? This is because semiconductors are used in digital devices. Semiconductors process all kinds of information using binary numbers, the simple 0 and 1. Utilizing this, you can control the current flow through converting it to a digital language of zeros and ones. Using this, we can control electronic devices and make them remember information. What was the world's first semiconductor? It was a transistor.
In 1947, Bell Labs in the United States invented the world's first transistor. And from there, the modern history of semiconductors began. The word transistor is a combination of the word trans and resistor. It's the part that is in charge of amplifying and switching electrons in an electronic circuit. Through the switching function of the transistor, you can distinguish the binary signal 0 and 1. And a semiconductor chip, which is the assembly of countless transistors, is able to store information and perform operations, just as how the brain functions. Later, as the integrated circuit, or IC, was developed by Jack Kilby in 1958, the shape of today's semiconductors was created. ICs, which are made using semiconductors' electronic properties, are generally called semiconductor chips. Billions of transistors lie inside a chip as small as a fingernail, with multiple transistors, diodes, resistors, and capacitors, in which the various microelectronic circuits of devices are attached into one chip. Today, we look into the concept of semiconductors. In summary, semiconductors are the key components of digital devices that change resistivity depending on Okay, so in this video, there are some basic idea about the semiconductors, what is semiconductor, what is silicon, how we can expect. So now the chip design. What is chip design? What is the meaning of chip design? Whatever the electronic circuit we make, so how we fabricate that electronic circuit on the silicon. Silicon is the raw material. तो जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया है तो वी हैव टू फैब्रिकेट दैट सर्किट इनटू द सिलिकॉन इनटू द मटेरियल सो आफ्टर द फैब्रिकेशन व्हाटएवर द पर्पस जो भी हमारा पर्पस है जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसकी थ्रू हम परफॉर्म करा सकते हैं सो एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व द प्लानिंग मींस व्हाटएवर द पर्पस व्हाटएवर द आइडिया देन द कोडिंग coding के लिए we have to use some software like for VLSI technology if you want to code so the Verilog and the VSDL there are the two good softwares so जिसके थ्रू हम coding परफॉर्म कर सकते हैं Xylem is the software Verilog and VSDL is the languages Verilog is the advanced language of the VSDL इसके अलावा यदि हमें लेआउट डिजाइन करना है लेआउट देखना है तो वी कैन यूज द कैटेंस सॉफ्टवेयर जिसमें हम लेआउट चेक कर सकते हैं आफ्टर फाइनलाइजिंग द डिजाइन दिस डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू द टिपिकल लेआउट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम किसी आईसी की करते हैं तो उसके उसको हम फैब्रिकेशन करते हैं गुड चिप डिजाइन फोकसेस ऑन स्पीड लो पावर यूज एंड स्मॉल साइज है ना जब भी हम कोई भी नया इनोवेशन करते हैं जब भी कोई भी नई चिप डिजाइन करते हैं तो हमारा हमेशा फोकस होता है कि चिप का साइज रिड्यूस हो हम जितना उसको रिड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे पावर कंजम्पशन वी ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द पावर कि कम से कम वो पावर कंज्यूम करें इसके अलावा नंबर ऑफ गेट्स है वो भी हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे लेस नंबर ऑफ गेट में वो सारा टास्क परफॉर्म होता है तो उसके लिए हमको करना होता है ऑप्टिमाइजेशन तो इन हाउस चिप डिजाइन दैट मींस कि इन इंडिया में यदि चिप डिजाइन पॉसिबल होती है तो क्या उससे बेनिफिट मिल सकता है कि कंपनीज हैव द फुल कंट्रोल अभी जो चिप्स एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कॉस्ट भी बहुत हमको पे करना होता है सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि बहुत सारा जो डाटा है वो सेव हो जाता है तो हमारे जो कंट्री का डाटा है वो सेव नहीं होता So these are the some top companies who deal with the chip designing that is Qualcomm, AMD, Broadcom, NVIDIA, MediaTek and the others.
Semiconductor, there are the one bar chart that represent how the chip design market. So already we know there are so many of the electronic gadgets. हम सभी electronic gadgets use करें, multiple electronic gadgets use करते हैं. तो जितने ज़्यादा electronic gadgets हम use करेंगे, उतना ज़्यादा we need to the chips, we need to the this type of the circuitry. Now we talk about the AI. How AI used in the chip design. So this is the market for the with respect to the market. Market में AI के लोग कैसे chip design करेंगे, कितना स्पीड से वो ग्रो करेगा. This is the number. AI की तो डिटेलिंग में हम अभी आगे स्लाइड में. So the importance of in-house chip design. So firstly, reduce the dependency on the foreign technology. यदि हम अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं फॉर चिप डिजाइन, तो हमें अदर कंट्री की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. Enhance the product customization and the optimization. Because in the foreign they designed the chip for own purpose. वो अपने पर्पस से अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे डेवलप द चिप. यदि इंडिया को रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें डिफेंस के लिए, हमें ड्रोन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी वांट सच टाइप ऑफ द चिप, तो अदर जो कंट्री होती है वो मना कर देती है कि भाई आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. क्यों यूएसए इजराइल डिफेंस में इतना आगे है? बिकॉज दे हैव द ओन चिप डिजाइन. बिकॉज नाउअडेज ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑल द कम्युनिकेशंस डिपेंडेंट ऑन द दीस चिप्स, क्योंकि यही चिप सारी प्रोसेसिंग करती है. जितना भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन इन चिप के थ्रू प्रोसेस होकर ही कंप्लीट होता है. इनसे वो डेटा प्रोटेक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल दैट इज जो पेटेंट्स है, समवन मेक अ डिजाइन, उस डिजाइन को यदि हम इंडिया में वो चीजें कंप्लीट होगी तो वो डिजाइन हमको किसी और को शेयर नहीं करना होगा. बट इन यूएसए एंड अदर कंट्रीज we have to send that design to that country. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है खत्म हो जाता है. सपोज नेशनल इनिशिएटिव्स है ना, जैसे अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. So for completing this purpose we have to develop the chips in India. Okay, now the types of the chips है ना. तो चिप डिजाइनिंग के लिए फर्स्टली भी should know कि वे कितने टाइप की चिप्स होती है. तो बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन लेवल इट स्टार्ट फ्रॉम द एसएसआई टेक्नोलॉजी. एसएसआई दैट इज द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दैट द एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट द वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. सो जैसे जैसे वी आर गोइंग द टेक्नोलॉजी सिमिलर होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ गेट्स को हम फैब्रिकेट करने लगेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द few gates like 10 to 100 gates, then we switch into the 1000 and 10,000, then lakh, 10 lakh, and currently जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है यहाँ पर हम 10 million approximately 1 crore gates हम बहुत easily फैब्रिकेट कर लेते हैं. Now the types of chips based on the functions. जितने भी टाइप की चिप्स हैं जो हमारे आसपास हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज करते हैं, सो देयर आर सम टाइप्स लाइक द माइक्रो प्रोसेसर चिप्स. वी आर यूज माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इन द अवर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक द सेल फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैब. So microprocessor chips, these are the known as brain of computer, because microprocessor chip is only for the processing purpose. Example जैसे Intel Core i7. Next is the microcontroller chip. Microcontroller chip is a type of the mini computer because it has the multiple some more chips. The microprocessor में से क्या होता है, processing unit होती है. Microcontroller में controlling unit भी होती है. तो उसमें खुद की मेमोरी होती है, उसमें एड्रेस भी होता है, कैसे मेमोरी भी है, प्रोसेसिंग यूनिट भी है. तो इट्स जस्ट अ मिनी कंप्यूटर लाइक 8051 ऑडियो पीआईसी. नेक्स्ट is memory chips. So memory chips is just like these chips
आर यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि पेन ड्राइव के एक मेमोरी चिप है कि आप उसको पावर ऑफ नहीं कर देंगे, बट वो डेटा एक बार आपका पेन ड्राइव स्टोर हो गया तो उसको बढ़ा देगा। सो दिस टाइप ऑफ द मेमोरी चिप, like a digital signal processing chip, DSP chip. So especially for the audio and video, तो मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी ऑडियो वीडियो की प्रोसेसिंग है, so in that cases we have to use the DSP chip. Some more chips that is based on the application specific integrated circuit, like जैसे कैमरा कैसे पिक्चर को कैच करता है, देन उसको प्रोसेस करता है, देन मल्टीपल्स में जो हमारे ऑप्शंस हैं, कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कंट्रास्ट कम ज़्यादा, सो टू कंप्लीट दीज ऑल टाइप ऑफ द प्रोसेस, दीज ऑल टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू यूज द वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द चिप, दैट इज द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट इज द field programmable data. This is very important chip for the VLSI. VLSI में mostly we work on the FPGA. You know why it's important? Because it's a reprogrammable. Once the IC is manufactured, तो सभी IC में क्या होता है, जो भी टास्क के लिए हमने उसे डिजाइन किया है, फैब्रिकेट किया है, उससे सिर्फ वही टास्क कंप्लीट होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते. बट जो फील्ड प्रोग्रामेबल डेटा है, so this particular IC can be reprogrammed multiple times. We can reprogram. Similar like a pen drive. जैसे pen drive में हम multiple time data store कर सकते हैं, delete कर सकते हैं. ना similar FPGA IC. अच्छा, FPGA IC it is used for the high level of the computer, high level of the system, because it's a costly. Like the initial the basic FPGA IC है, it starts from the 12,000. एक सिंगल IC 12,000 की आती है. नॉर्मल तो हम वी यूज द सेल फोन, लैपटॉप, यदि हम सेल फोन की बात करें तो 10 से 50,000 का सेल फोन यूज करते हैं. तो एक 15,000 के सेल फोन में 12,000 की IC लगना इम्पॉसिबल है. तो जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं, जिनकी कॉस्ट करोड़ में होती है, तो वहाँ पर हम जनरली FPGA IC का यूज करते हैं. और FPGA IC को यूजली VLSI टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाता है. जैसे लाइक जो microprocessor and microcontroller. So this IC can be made by using LSI, MSI because number of bits उसमें कम होते हैं, है ना. जैसे कि microprocessor suppose हमें 100 bits fabricate करना है, तो we don't need the VLSI technology, we need only the SSI, small scale integration. But FPGA में we use the VLSI. So that means FPGA में हम 1 lakh, 10 lakh, 1 crore लगभग इस क्वांटिटी में बिट्स को हम फैब्रिकेट करते हैं. Next is the system on chip, SoC, like CPU, GPU. GPU is a graphical processing unit also. बहुत सारे सिस्टम्स में GPU होता है. लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो दे आस्क कि ग्राफिक्स कार्ड चाहिए कि नहीं, तो ग्राफिक कार्ड से जस्ट टाइप होता है GPU. इसके अलावा जो हम AI की जो कोडिंग करते हैं पाइथन में गूगल पर जाकर, तो उसको जब हमें प्रोसेस करना होता है, सिमुलेट करना होता है, देन दे आस्क कि आपको ग्राफिक सेलेक्ट करना होता है. एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, वो हमें सेलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है. So the microprocessor, some ICs which is designed in India. Okay, like microprocessor, so it is designed in India, fabricated in India, partially. कुछ पार्ट यहाँ फैब्रिकेट होता है, कुछ बाहर होता है. एग्जाम्पल है कुछ माइक्रोप्रोसेसर IC के नाम है, दैट इज शक्ति, वेगा. सिमिलर का माइक्रो कंट्रोलर, it is also developed in India, fabricated in India. Sans labs, this example है. Memory chip, it is not designed in India. Assembly होती है गुजरात में, example बाइकॉन दिया. DSP chip, it is designed in India. ASIC, specific जो application created also designed in India. So in this way you can say the most of the design
including the FPGA and the memory chip. So why? Because FPGA it needs the VLSI technology. So this technology के लिए we have the complex machine. जिस machines की machinery की need है वो हमारे पास नहीं है. यदि हम purchase कर भी लेते हैं तो we have no such skilled person. So most of the designing part India में हो जाता है, but fabrication India में नहीं हो पाता, possible नहीं हो पाता. Some challenges to chip design in India: lack of fabrication plants. India has very few semiconductor labs. Most chip designs are sent abroad for manufacturing. High setup cost. Already in a discussion there is cost to be heavy machines, so it's a very costly. Limited skilled workforce. इंडिया की भी बात की जाए तो मोस्टली जो VLSI की जो कंपनी है दैट इज सिचुएटेड इन द हैदराबाद ओनली, मोस्टली जो कंपनी है सब पुणे ऑल्सो, एंड जो VLSI इंजीनियर्स हैं तो स्मॉल स्केल पे तो हैदराबाद में दे वर्क, बट यदि उनको ग्रो करना है लार्ज स्केल में वर्क करना है तो मोस्टली दे शिफ्टेड इन द अब्रॉड, मोस्टली इन चाइना, जापान, यूएस. तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो इंडिया में मिलता नहीं. डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स. जो रॉ मटेरियल है ना, जैसे हमने बात करी कि सिलिकॉन वी कैन गेट फ्रॉम द सैंड, बट जो प्रोसेस है लेंथी है तो अल्टीमेटली जो सिलिकॉन इज द रॉ मटेरियल वो भी हमारे पास नहीं है. आपको नीड टू इंपोर्ट. कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो मेरे साइड इज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बिकॉज एक वायरस के बराबर ट्रांजिस्टर्स गेट्स को हमें फैब्रिकेट करना है एक नैन के साइज की चिप में, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स है. जो क्लीनलीनेस होती है, जो कंपनी की क्लीनलीनेस होती है, ये लगभग 10,000 टाइम्स ज़्यादा होती है एक अच्छे हॉस्पिटल से. इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्लीनलीनेस होती है. इसके अलावा किसी भी तरीके का वहाँ पर चार्ज नहीं होना. जिस तरीके के शूज पहने जाते हैं, कवर की जाती है बॉडी को भी, कहीं से भी चार्ज ना हो, नहीं तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. Okay, weak supply chain. So India has a complete ecosystem from raw material supply to testing and packaging. जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया कि एक कंप्लीट चिप डिजाइनिंग के लिए प्रोसेस होती है, जो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. सो उस प्रोसेस में जब आपको रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हर सिस्टम में नंबर ऑफ मशीन की, नंबर ऑफ स्किल्ड फोर्स की नीड होती है. तो ये प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता. लिमिटेड रिसर्च एंड इनोवेशन. इंडिया में इसके इनोवेशन के बहुत ज़्यादा बजट भी अलाउड नहीं है, तो इनमें इनोवेशन हो पाया. पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज. इसके लिए भी का रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी है ना. इसके अलावा जो हीट जनरेट होती है सारी प्रोसेस में, उसको हीट को कूल डाउन करने के लिए भी नीड का ड्रिंकिंग वाटर. नॉर्मल जो वाटर होता है ड्रिंकिंग वाटर, उसी से इसकी हम जो हीट होती है उसको कूल कर सकते हैं, है ना. जो सी का वाटर होता है वो हीट नहीं कर पाता. जैसे एआई जनरेटेड भी जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पर भी लार्ज अमाउंट में जो है ड्रिंकिंग वाटर की ही नीड होती है ना. नॉर्मल जो वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो यूज नहीं हो पाता. So now we see the how AI helps to chip design. तो AI के बारे में हमने सबने सुना है ना, AI is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो AI का जो एडवांस वर्जन है उसका नाम बता सकता है कोई? एडवांस वर्जन ऑफ द AI दैट इज द AGI. AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AGI इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. जनरल इंटेलिजेंस वर्क लाइक ए ह्यूमन ब्रेन. अभी नॉर्मल एआई तो क्या है कि जो हम फ्री वर्जन यूज करते हैं सभी के, अगर चैटजीपीटी और जेमिनी हो, वी आर यूजिंग मोस्टली फ्री वर्जन. तो फ्री वर्जन में दे आर प्रोवाइडेड बाय एआई, जिसमें डेटा के रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. ये जैसा इनपुट आप देते हैं वो वैसा आउटपुट नहीं मिलता. बट इसी में एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी अब आ रही है धीरे धीरे. काफ़ी
कंपनीज ने लॉन्च कर दिया है, पेड वर्जन में मिलती है, दैट इज द AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. So it's sufficient to take decisions, sufficient to filter out the results, कि कौन से रिजल्ट सही है, कौन से रिजल्ट गलत है. अभी तो AI हमको सारे रिजल्ट दिखा देता है, बट AGI हमको सही रिजल्ट नहीं बताएगा. So how AI has firstly faster design, like जैसे यदि AI नहीं है और आपको एक पिक्चर जनरेट करना है, तो आपको किसी न किसी पिक्चर ड्राइंग टूल से, जैसे पेंट है या PPT या नॉर्मल वर्ड पे आपको एक ब्लॉक डायग्राम या नॉर्मल डायग्राम ये आपको डिजाइन, so you have to spend the time. बट अब AI में लाइक जेमिनी या चैट GPT है, तो आप सिंपल कमांड डालें कि क्रिएट द इमेज फॉर फ्लो चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, तो आपको फ्लो चार्ट क्रिएट होके आ जाएगा. सो डिजाइनिंग इज नॉट वेरी इजी. तो अब AI के थ्रू यदि हमको नॉर्मल भी चिप डिजाइन करना है ना, जैसे कि हम VLSI की कोडिंग की बात करें, तो हमने VLSI में कोडिंग किया वेरिएबल को यूज करके, हमने एक फिल्टर बनाया, एक मल्टीप्लायर बनाया. तो उस मल्टीप्लायर फिल्टर को बनाने के लिए हमको एक कोडिंग लिखना होता था पहले, है ना, बहुत टाइम कंज्यूम होता था. अब क्या होता है कि सिंपल आप कमांड प्रॉम्प्ट में डाल दो कि क्रिएट द कोड फॉर फिल्टर मल्टीप्लायर, तो विद इन सेकंड्स वो सारी कोडिंग जनरेट होके आ जाती है. डिजाइन आपको नए चाहिए, चिप डिजाइनिंग इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. तो नई चिप डिजाइनिंग चाहिए तो जस्ट गिव द कमांड्स एंड चिप डिजाइन इज क्रिएटेड. एरर डिटेक्शन, नॉर्मली कोडिंग लिखने के बाद एरर फाइंड आउट करना इज ऑल्सो वेरी टफ टास्क. एक एक एरर फाइंड आउट करने में कई बार महीनों चले जाते हैं, पता ही नहीं चलती कि जब कई 10,000 की लाइनों में कोड है, एरर आ कहाँ पे गई. बट नाउ इट्स वेरी इजी, हम एरर शो करके पुट कर रहे हैं चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, ये पूरी कोडिंग आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वो इजीली बता देगा कि यहाँ पर एरर है एंड हाउ वी रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर एरर. That's a better performance. So AI helps to achieve faster, smaller, more power efficient. Testing support, AI tests chip performance before making it every time. Manufacturing help. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में पहले जब when we integrate the gates into the IC, तो 10 lakh gates है, 10 lakh gates को आपको एक IC में फैब्रिकेट करना है. तो किस तरीके से हम अरेंजमेंट करें, तो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता था कि हाउ वी अरेंज दैट गेट्स इनटू द IC, ताकि जो हमको डिजायर्ड जो आउटपुट्स है वो मिल जाए विद यूजिंग द लेस नंबर ऑफ गेट, लेस नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, लेस नंबर ऑफ द पावर. बट AI हेल्प करके बता देगा कि these are the ways, तो आपको 10 वे बता देगा अलग अलग. आउट ऑफ these 10 ways एक फाइनल वे बता देगा, दिस इज द फाइनल वन ऑफ द बेस्ट वे. थ्रू दिस वे वी कैन arrange that particular gates into the IC. Continuous learning लाइक जो भी हम जैसे FPGA की हम IC बनाते हैं, तो FPGA की IC का रीप्रोग्रामेबल है. तो रीप्रोग्रामेबल IC, सपोज एक बार IC ड्रॉ हुई, अब नेक्स्ट हमको उस एरिया जो कि बैंगलोर में है, इट मेक द एडवांस प्रोसेसर, इट यूजेस द कंप्यूटर साइंस सर्वर्स, नेक्स्ट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा सेमीकंडक्टर. So overall in India there are already some companies which is dealing the AI, dealing the chip manufacturing, but still these companies it's not completed the full task. Most of the companies do only the packaging work, either designing work, which हमने टेबल में देखा था, either designing की डिजाइन कैसा होगा उस IC का, उस गेट्स का, और उसकी पैकेजिंग कैसे करना है. तो most of the companies do only this work. Some more company that is Micron Technology India, Gujarat. Mostly this company makes chip for the phones, laptops, servers. Next company is Kahar Semiconductor that is situated in
इन राजस्थान। ये LED ड्राइवर मेमोरी चिप बनाती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके अलावा HCL, विप्रो, इन्फोसिस, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम। So these all about which company already working in the India. Now we discuss about the process of chip design. So process of chip design, firstly we have to specify the objective. हमारा objective क्या है? Why we make the chip design? So define what the chip will do, function, performance, power, cost. Like हमको एक सिंपल CPU के लिए बनाना है, arithmetic logic unit, ALU बनाना है, arithmetic logic unit, which calculate the mathematical operation. So ये हमारे purpose होगा. Next is architecture design. Architecture design is just a block level structure, block level diagram, step by step उसमें क्या होगा. Next is the RTL, register transfer level. RTL so it is designed in the Xylem software. Xylem use करते हैं through the variable or basic coding. We make RTL design. Next is the functional verification. Test RTL code जो भी RTL code बनाया है, we have to check कि it's error free और उसमें कोई error आ रही है. Next is the synthesis. Synthesis जो RTL जो कोड हमने जो RTL कोड हमने बनाया है, so we want to convert that code into the gate level design. तो gate level design में exactly देख पाते हैं कि जो gate है उसकी placement कहाँ है, so that हम उसको connection कर सकते हैं, वायर से में हम लगा सकते हैं. So process of chip designing the next step floor planning and the placement. जैसे हमने देखा कि gate level जब हमने बना लिया, तो gate level में किस gate को किस gate से कैसे connect करना है, किस वायर से connect करना है, उसी placement क्या रखना है ताकि less number of wires connect हो सके, less number of gates से. Routing, there are number of topologies जिसके जो हम routing perform करते हैं. Next है timing analysis and optimization. Optimization that is उसके performance parameters like delay, area, power, उसके number of input and output में जो कितना कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी overall memory consume कर रहा है, delay time इसमें कितना आ रहा है. Next is physical verification. यहाँ पर we have to check the design rules because software में सारी चीजें ready हो गई. Now we have to convert it to physically format. So physically format के लिए we have to do the physical verification. Next is the tape out. Final design is sent to the semiconductor fab for manufacturing. मतलब ultimately जब आपका design final हो गया, now you are sending to the semiconductor labs to the fabrication process. So now fabrication किसके थ्रू होगा? Using the silicon wafers. Silicon के wafers होते हैं जिनमें फोटोलिथोग्राफी, केमिकल प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस होती है जिससे थ्रू फैब्रिकेशन प्रोसेस होती है कंप्लीट. नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड पैकेजिंग. सो फाइनली द फिनिश्ड चिप्स आर टेस्टेड फॉर डिफेक्ट्स एंड पैकेज फॉर यूज. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिकेशन, देन डिजाइन, देन वेरिफिकेशन, देन फैब्रिकेशन, देन टेस्टिंग, देन द पैकेजिंग. दिस इज द एंटायर प्रोसेस. एक 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो है जिसके जो मैं पूरी प्रोसेस को देख भी सकते हैं, तो आई थिंक उसको और जल्दी हमें चीजें क्लियर हो. For manufacturing, oxidation, photolithography, etching, deposition and ion implementation, metal wiring, EDS, and packaging. Let's take a closer look at these processes. In this video, we help you understand the semiconductor industry, which is interconnected and constantly evolving in the enormous semiconductor ecosystem. Today, let's learn about the essential semiconductor manufacturing process. In the first episode, we talked about silicon, the main material which is used to make semiconductors. In order for silicon to turn into a semiconductor chip, it needs to go through the essential process of wafer manufacturing, oxidation, photolithography, etching, deposition and ion implementation, metal wiring, EDS, and packaging. Let's take a closer look at these processes.
Semiconductors are stacked high and solid to form a complex structure, similar to a high-rise building. Constructing a building starts with the foundation. A wafer is the foundation for the semiconductor. Most wafers are made of silicon extracted from sand. How can these tiny grains of sand become a wafer? This is the wafer. Okay, this is the wafer. जो वेपर होता है वेपर यहाँ मुझे सिलिकॉन so silicon looks like this type and this wafer of silicon extracted from the sand entire process यहाँ अभी हम फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट स्टेप है वेपर मैन्युफैक्चरिंग First, sand is heated until it melts into a high-purity liquid and then gets solidified by crystallization. The resultant silicon rod is called an ingot. These ingots are sliced into a disc, thinly sliced wafers. The surface of sliced wafers is rough and contains defects, so polishing machines are used to polish the surface of the wafer. The reason is that defects on the surface could negatively affect the precision of circuits. If you look at a photo of wafers, you can see a grid pattern on the surface. Yes, the word wafer comes from biscuit wafers. A wafer made this way is the main material for semiconductors. Because the larger the diameter is, the greater the number of chips that can be produced per wafer is. So, the diameter of wafers is becoming larger. Because the resultant thin disc-shaped wafer is not conducted yet, a process to make wafers semiconductive is required. First, wafers go through the oxidation process. Oxygen or water vapor is sprayed on the wafer surface to form a uniform oxide film. This oxide film protects the wafer surface during the following processes and also blocks current leakage between circuits. The film acts as a strong protective shield. Now, the foundation is ready. The building up process begins. Just as you draw blueprints to build a building, you draw a circuit design onto a wafer, which is called the photolithography process. It is called photo for short because it is similar to developing a photo taken on a film camera. With semiconductors, a photomask functions as the film. A photomask is a glass substrate with a computer-designed circuit pattern. ये जो स्ट्रक्चर है जैसे द स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज द सर्किटरी स्ट्रक्चर ये जो सर्किट बनाते हैं इसी को हम बोलते हैं डिजाइन करना ये जो डिजाइन करने की आई है डिजाइन इस डिजाइन को क्या करना होता है वेफर का जो पार्ट है छोटा सा पार्ट दिख रहा है इस यूनिट में इसको फैब्रिकेट करना होता है तो एग्जांपल के लिए तो रियल आपका जो डिजाइन होता है तो वेरी कॉम्प्लेक्स जैसे यहाँ पर आपको सिंपल आपको 10-12 सर्कल दिख रहा है जो रियल वाला जो होता है उसमें 10 लाख होते हैं 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ऐसे ब्लॉक्स होती हैं वायर्स होती हैं और वो जाके एक वेपर में जाके फैब्रिकेट होती है जो वेपर का साइज होता है 1 mm 2 mm होता है 1 2 mm और यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि 1 2 mm के अंदर से 1 करोड़ ऐसे छोटे छोटे गेट्स लगे हैं इतना छोटा साइज है In order to draw the circuit on the wafer, the photoresist, a material that responds to light, is applied thinly and evenly on the oxide film previously placed on the wafer. Now, when light transfers the pattern photomask, the circuit is drawn on the wafer surface. Just like developing a photo, a circuit pattern is imprinted on the wafer by spraying development and removing unlit areas from the areas that are exposed to light. After an inspection of the wafer to check whether the pattern is drawn well, it moves on to the next step. Now, unnecessary materials are carved out so that only the design pattern remains. Using a liquid or gas etching, unnecessary materials are selectively removed to draw the desired design. When chemical solutions are used for etching, it is called wet etching. And when gas or plasma is used, it is called dry etching. We will talk about these details in the future. Let's imagine constructing a building on a semiconductor chip, smaller than a fingernail and thinner than a sheet of paper. The photolithography process and the etching process are repeated several times on the wafer, layer by layer. Here,
an insulating film that separates and protects the stacked circuits is required. It is called a thin film. Coating the thin film at a desired molecular or atomic level onto a wafer is called deposition. Since the coating is so thin, precise and sophisticated technology is required to uniformly apply the thin film on a wafer. To give the semiconductor electrical characteristics, ion implementation is also required. A semiconductor made of silicon does not conduct electricity, but adding impurities, it conducts current and has conductive properties. In summary, through the wafer manufacturing, oxidation, photolithography, etching, deposition, and ion implementation processes, the wafer becomes conductive and numerous circuits are drawn on it. Now, in order for this circuit to work, an electrical signal must be applied. It is necessary to create a path for electricity to pass through according to the circuit pattern. This process is called a metal wiring process. It is a process that allows electricity to flow by depositing a thin metal film using materials such as aluminum, titanium, or tungsten, so that electricity can pass through the semiconductor well. The chip manufacturing processes are now coming toward completion. The next step is EDS. This is the process of testing to ensure flawless semiconductor chips. In other words, it is a testing step to sort out defective chips. Yield is a percentage of prime chips relative to the maximum chip count on a single wafer. The semiconductor chips selected through the EDS process are made in a form suitable for devices. This is the last process, the packaging process. The wafer completed through the previous steps are cut into individual semiconductor chips that can be loaded on an electronic device. An individual chip must have a path to exchange electrical signals with the outside and have a form to protect it from various external elements. The wafer is cut into individual chips, and the dice or saw chips are placed on the PCB board. In the bonding step, the contact point of the semiconductor chip placed on a substrate is connected to the contact point of the substrate. Then, molding finishes the chip package to its desired shape. After sealing the semiconductor and labeling the product name, the semiconductor chip we commonly see is completed. Of course, only after going to the final test will it become a finished product. Okay.
Okay, so now we continue. You all from the electronic students, which year? 7th semester. Okay. So we will say पढ़ लिया होगा आप लोगों को अभी पढ़ना है Okay, so यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कोई डाउट किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क अभी तक हमने देखा कंप्लीट प्रोसेस फॉर द आईसी चिप मैन्युफैक्चरिंग है ना स्टेप बाय स्टेप हमको क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं Okay, now there are some tools, some software जिनका we can use like the front-end design tools. So, what is the basic meaning of the front-end? Front-end that means जो भी हमारा सर्किटरी बन रहा है, जो सर्किट डिजाइन कर रहा है, उसके बैक में क्या कोडिंग यूज हुई है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रंट-एंड. So, for the front-end, mostly we use the Xylem software. Xylem की हम बात करें तो Xylem के अंदर we use the Verilog and the VHDL code. Xylem के अलावा भी there are so many other software for the coding purpose. One more software that we have Synopsys design compiler. It is used for the synthesis that is using the converting RDI to the gate level. Next step, cadence. Cadence is used for the digital synthesis and the mental graphics. Mental graphics, models, clusters, and for simulation and the verification. In the Xylem software, there are basically two parts. One is the implementation part and another is the simulation part. So when we talk about the implementation in the Xylem, so वहाँ पर क्या होता है कि we have to write the code. जो भी हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव्स है सिंपल एग्जांपल जैसे कि वी वांट टू मेक द एडर सबट्रैक्टर मल्टीप्लायर सो सिंपली वी हैव टू राइट द कोड इन द Xylem यूजिंग आइदर VHDL कोड और द Verilog कोड सो उसको कहते हैं वो हमारा इंप्लीमेंटेशन पार्ट है. इन द सिमुलेशन पार्ट वी हैव टू चेक दैट कोड कि दिस कोड इज रियली रनिंग और नॉट. So in the simulation part, we have to give the input and check the outputs. Like our input we are A and B. If we want to make a multiplier, so multiplier में क्या होगा? We will use the A and the B, and output generate होगा उसको बोलेंगे C. So in the simulation part, we have to see that particular thing A, B and C, input and the outputs. Now the second is the backend design tools. So backend design tools, that means whatever we have in the code, so code के respective है what will be the design. तो design कैसा दिखेगा? इसका design जो भी हम सर्किटरी बना रहे हैं. So for the design we use the cadence. Cadence is very good software जिसमें हम layout design वगैरह कर सकते हैं. Synopsys सॉफ्टवेयर भी ये भी काफी अभी नया और अच्छा सॉफ्टवेयर है. इसके अंदर भी आप राइटिंग कोडिंग भी कर सकते हैं. कोडिंग के साथ साथ भी कैसे लेआउट कर सकते हैं. देन द मेंटल ग्राफिक्स कैन बी अदर टूल इज फॉर द वेरिफिकेशन एंड द टेस्टिंग टूल. अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी जॉब होती है जिसको हम बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सुना होगा आपने. बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है दे ऑफर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब दैट मींस कि वन इज द कोड डेवलपर जिसमें क्या है कोड को डेवलप कर लिया. इसके बाद उसको हमने सिंथेसिस सिमुलेट करके चेक कर लिया. फाइनल जो उसको हम फैब्रिकेट करने से पहले तो आगे टेस्ट करते हैं. उसको कहते हैं वैलिडेट करना. तो वैलिडेट करने के लिए वी अगेन चेक ऑल द इंस्ट्रक्शंस. वी अगेन चेक ऑल द सिंटैक्स ऑल द इनपुट्स आउटपुट. उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग.
मतलब आपके पास सब कुछ बना हुआ है, यू हैव टू जस्ट टेस्ट कि वो एक्चुअल में वही रिजल्ट दे रहा है जो अभी तक की प्रोसेस में क्लेम किया है कि नहीं किया है। सिमिलर इसके लिए भी यूज द सिनॉप्सिस, कैटेगरी एंड सिस। नेक्स्ट इज द एनालॉग एंड मिक्स्ड सिग्नल डिजाइन टूल्स। तो कैटेगरी मेंटल ग्राफिक्स बीएससी में यूज होता है, टेप आउट एंड फैब्रिकेशन सपोर्ट टूल्स कि रियल में फैब्रिकेट होने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो मोस्टली ये जो इंडिविजुअल टूल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज अब नहीं होता है, अब इनका यूज थोड़ा कम हो गया है बिकॉज हर जगह हर स्तर को एआई ने ले लिया है। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी की गेट के लिए, किसी भी सर्किटरी के लिए कोड राइटिंग से लेंगे। सो इनिशियली लाइक वी आर यूजिंग द जाइलिन फॉर द कोड राइटिंग, बट नाउ वी यूज द एआई फॉर द कोड राइटिंग। एआई से हमने कोड को राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में जब एरर्स है, जैसे कि एरर कम, तो पहले हमको एरर ना लगे तो मैनुअली फाइंड आउट करना था, नाउ वी फाइंड आउट एरर एआई। फिर नेक्स्ट स्टेप जैसा मैंने बोला कि वी हैव टू चेक द लेआउट डिजाइन, हाउ इट विल लुक लाइक। अगेन थ्रू द एआई वी कैन चेक द लेआउट डिजाइन। सो हर एक स्टेप में हम एआई का यूज करते हैं। तो कहीं जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी हमको डिपेंडेंसी नहीं है। एक बेसिक वर्जन भी है और थ्रू द एआई हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में अगेन वी यूज द एआई, तो हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब फाइनली हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं, तो अब फैब्रिकेशन में पहले से क्या होता था कि जो भी आपका सर्किटरी आपने सेट कर दिया तो सिंपल वैल्यू टू फैब्रिकेट का चिप। अब वो फैब्रिकेट करते थे, फैब्रिकेट करने के बाद देन दे चेक द रिजल्ट्स कि इट इज गिविंग द एक्चुअल रिजल्ट्स और नॉट। बट अगेन हम यहाँ पर एआई आ गया है कि वो रियल टाइम में फैब्रिकेशन टेस्टिंग कर सकता है ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन, बिफोर द फैब्रिकेशन, आफ्टर द फैब्रिकेशन। वो पहले ही चेक कर लेगा कि रिजल्ट इज कमिंग और नॉट। ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन वो बता देगा कहीं भी कुछ मिस्टेक हुई होगी तो एरर बता देगा कि यहाँ पर मिस्टेक है, आप उसको रेक्टिफाई कर लें। सर्किटरी बन भी गई है, बनने के बाद कहीं एरर आ गई तो उसी समय बता देगा, तो यदि एरर है तो आप उसको रिमूव कर लो, दूसरी आईसी में कर दो। Now the IPR, IPR that is the intellectual property rights in the chip design, है ना, जिसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं पेटेंट, पेटेंट इन द चिप डिजाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एंटायर एनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनी कंपनी, आइदर वो चिप डिजाइन कंपनी हो या कोई भी डिजाइनिंग कंपनी हो, IPR इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज जो भी स्किल्ड पर्सन, इंजीनियर, जो भी वो मेहनत करके बनाते हैं, चाहे वो कोडिंग करते हैं या डिजाइन बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, अदर कंपनी वेरी इजीली उसको क्या कर सकती है, कॉपी कर सकती है। तो हाउ दी प्रोडक्ट इवन कोई कंपनी कॉपी नहीं कर पाए, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू गो टू द IPR सेक्शन। यदि कोई लॉजिक डेवलप किया है, किसी प्रोग्रामर ने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसको हम कॉपीराइट कर सकते हैं। यदि कोई लेआउट डिजाइन है, दैट मींस सर्किटरी का चिप का कोई डिजाइन पार्ट आया है तो उसको भी मैं प्रोटेक्ट। यदि कोई फाइनल आपका जो आईसी फैब्रिकेट हो गई है, उसका जो सर्किटरी है, फाइनल उसका जो डिजाइन है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर द वेरियस सिस्टम्स, है ना। तो यहाँ पर पेटेंट हम लिख सकते हैं लाइक पेटेंट, so new process of design idea, like अभी ऐसा अभी हमने सर्किटरी सपोज नहीं बनाई चिप डिजाइन की, बट इफ एनीवन कम्स अप सम न्यू थॉट्स कि हाँ उसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, स्पेशली से हमें कोई कोडिंग बनाना है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट वेज। एक कन्वेंशनल वे है, आप एडवांस वे से बना सकते हो, नाउ हम एआई के थ्रू बना सकते हैं। तो वो जो आपकी प्रोसेस है जिसमें आप कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, दैट कम्स इनटू द पेटेंट। एग्जांपल है नोवेल चिप आर्किटेक्चर और एनी फैसिलिटी है, लाइक द डिजाइन। अब व्हाटएवर यू मेक द कोड, आपने कोडिंग कर ली सर्किट डिजाइनिंग के लिए, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू सम डिजाइन कि वो सर्किट का कुछ डिजाइन दिखेगा हमें कि वो कैसा दिखता है।
तो उस डिजाइन को सिक्योर करने के लिए वी हैव टू गो टू द डिजाइन पार्ट, डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर की हम बात करें कि सॉफ्टवेयर में आपने कुछ कोडिंग करी या आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया, सपोज जैसे जाइलिंग इज अ सॉफ्टवेयर टू राइटिंग द वेरिएबल ऑफ द रीजन कोड। सिमिलरली एनीवन में एनी सॉफ्टवेयर बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट में बनाते हैं, 7th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट कुछ वेबसाइट बना लेते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें से यूज है कोडिंग पार्ट और कुछ उसका आउटपुट होता है। सो उसको किस में प्रोटेक्ट करा सकते हैं, कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट करा सकते हैं। इट इज कॉपीराइटेड टू यू बिकॉज ये आपने बनाया है, ये सॉफ्टवेयर आपने बनाया है ना। कॉपीराइट लाइसेंस मिल जाता है उस सॉफ्टवेयर को, तो फिर कोई भी उसको यूज नहीं कर सकते। यदि यूज करना होगा तो कोई पेमेंट पहले आपको करना होगा, देन ही कैन यूज। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। जो डिफरेंट जितनी इंडियन कंपनीज जिनको भी हमने देखा कि दे आर मेकिंग चिप्स, तो उनको अपना जो भी चिप का उन्होंने नाम रखा, जैसे अपने देखा एक शक्ति है ना, चिप में शक्ति वेगा। सो दिस इज द ट्रेडमार्क, क्योंकि उस नाम से उस चिप को हम उस चिप का नाम उसी के नाम से चलेगा। नेक्स्ट इज द सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन पैटर्न, दैट इज द लेआउट पैटर्न। नॉर्मल डिजाइन एंड सेमीकंडक्टर लेआउट पैटर्न, देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ द आइडियाज। This is one example, इसके through we can understand. Like there is one laptop. इस laptop के अंदर there are different parts. Like the LED display. You know how LED is display? What is the entire process? कि LED कैसे display हो रही है? So it can come the patent और इसके अलावा भी जो उसके अंदर की जो circuitry है, जो concept है, जो main technology that comes under the patent. Body of the laptop is how the laptop is looking, so that is come under the design patent. The Apple sign, that is this particular company is selling this product using this sign, so this come under the trademark. User manual, how we can operate this particular laptop, it's come under the copyright. And next is the layout of IC, जो भी चिप डिजाइन चिप मैन्युफैक्चरिंग में बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चिप में whatever the concept, whatever the implication, circuitry design, तो उसको हम स्पेसिफाई रखते हैं किसके अंदर, SICS, that is the semiconductor integrated circuits layout design. So India has also a specific law for the semiconductor integrated circuit layout design in the year 2000. It protects the layout design of all type of the ICs जो कि इंडिया में क्या होती है, डिजाइन होती है। जितना भी जो कंपनीज इंडिया में, हैदराबाद में, पुणे में, देयर आर द डिजाइनर्स, डेवलपर जिनको हम कह सकते हैं, और वो डेवलपर जितना भी कोडिंग का जो काम करते हैं, सर्किटरी के फैब्रिकेट होने से पहले व्हाट एवर द डिजाइन पार्ट, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। And registration is done through the semiconductor integrated circuit layout design registry under the DPIIT government of India. So it is very crucial and important part कि जो भी इंडिया में कंपनीज है वो कुछ भी यदि बनाती है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करके और प्रोटेक्ट करने के बाद ही दे हैव टू सेंड टू द सिलिकॉन वैली फॉर द फैब्रिकेशन प्रोसेस. So this is the entire slides about the chip design. There are one more small videos in which how the AI helps to the chip design. उसको भी हम चेक करते हैं, देखते हैं. अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन डिस्कशन. तो हमको भी पता चलेगा कि अभी एक डेढ़ घंटे जो भी हमने डिस्कशन किया है कुछ आपको समझ में आया नहीं आया. ओके, सो वी सी द वीडियो. उसके बाद कुछ डाउट है तो डाउट थोड़ा सा सेशन होता है, छोटा मोटा जो भी आपको क्वेरी और डिस्कशन करना हो यू कैन आस्क.
are the engine of progress. They power everything from smartphones to supercomputers. Big data, artificial intelligence, and high-performance computing all rely on these tiny markers. As we demand more from our technology, the pressure is on to design even more sophisticated chips. This is where the world of semiconductor design is undergoing a revolution. The stakes are incredibly high. Whoever controls the design and production of these chips holds the keys to technological dominance. It's a race with far-reaching implications for economic prosperity and national security. In this rapidly evolving landscape, a new player has emerged: artificial intelligence. The global landscape of chip design is dominated by two superpowers, the United States and China. The US has long been the industry leader. American companies boast a commanding share of global chip design sales. They also dominate the market for electronic design automation, EDA tools, the sophisticated software used to design these chips. China, however, is rapidly catching up. The Chinese government has poured billions of dollars into its domestic chip industry. The goal is clear: to achieve self-sufficiency in semiconductor technology. Chinese companies are making strides, particularly in areas like mobile chips and consumer electronics. The competition between these two giants is fierce, with each side vying for technological supremacy. Artificial intelligence is poised to revolutionize the way chips are designed. This groundbreaking technology is not just a tool, but a game changer in the semiconductor industry. Traditionally, chip design has been a laborious and time-consuming process. Engineers have to meticulously plan and execute each step, often dealing with complex calculations and intricate designs. It involves countless hours of human ingenuity and expertise. Teams of engineers brainstorm, sketch, and iterate to create the perfect chip design. But the increasing complexity of modern chips is pushing the limits of traditional design methods. As chips become more advanced, the design process becomes exponentially more challenging. This is where AI comes in. AI has the potential to transform this intricate process by introducing efficiency and precision. AI algorithms can analyze massive data sets, identify patterns, and make predictions with remarkable accuracy. They can process information at speeds and scales that are impossible for humans. In the context of chip design, this translates to faster design cycles, optimized chip layouts, and improved performance. AI can help engineers achieve results that were previously unattainable. Imagine AI algorithms sifting through billions of potential circuit arrangements to find the most efficient design. This level of analysis would take humans years to accomplish. Or picture AI tools automating repetitive tasks, freeing up human engineers to focus on higher-level design challenges. This not only speeds up the process, but also allows for more innovative solutions. The integration of AI in chip design is just the beginning. As AI technology continues to evolve, its impact on the semiconductor industry will only grow, paving the way for the next generation of technological advancements. To understand AI's impact, it's crucial to grasp the sheer complexity of chip design. A modern chip can contain billions, even trillions of transistors, all interconnected in intricate ways. The process of designing these chips is broken down into multiple stages, each with its own set of challenges. One of the most complex stages is called floor planning. This involves deciding the physical placement of different components on the chip. The number of possible arrangements is astronomical. Imagine trying to find the optimal arrangement of pieces on a chessboard, but with millions of pieces instead of 64. It's a problem of mind-boggling complexity. Section 5, where AI falls short and where it shines. While AI offers tremendous potential, it's not a silver bullet. The technology has its limitations and isn't always the perfect solution for every problem. Current AI algorithms still struggle with certain aspects of chip design. They often lack the nuanced understanding that human engineers bring to the table. For example, they may excel at optimizing for a single objective, like performance, but they often fall short when it comes to balancing multiple conflicting constraints. Engineers frequently have to consider a variety of factors, such as power consumption, physical size, and cost, all at the same time. This is where AI can struggle. A chip might need to be designed for high performance, low power consumption, and a small physical size. A complex balancing act that AI finds challenging. This balancing act is crucial because the success of a chip often depends on meeting all these criteria simultaneously. However, AI shines in specific areas.
It excels at tasks that require speed and precision, which are often time-consuming and error-prone for humans. For instance, AI can rapidly perform design rule checking, a task that involves ensuring that the chip design adheres to a set of predefined rules. It excels at tasks like design rule checking, where it can rapidly identify potential violations in the design, saving engineers a significant amount of time. This allows engineers to focus on more complex aspects of the design, knowing that the AI has handled the more routine checks. AI can also optimize power consumption by intelligently routing signals and managing voltage levels, which is crucial for creating energy-efficient chips. Moreover, AI-powered tools are emerging that can automatically generate test cases for verifying chip functionality, a crucial step in the design process. These tools can identify potential issues early in the design phase, allowing for quicker iterations and more robust final products. In summary, while AI has its limitations, it also offers significant advantages in specific areas of chip design. Section. Okay, so in this video, we have seen there are so many of the advantages of the AI, and AI can do almost all steps, all work to making the chip design. But the limitations, what are one major limitation? AI cannot manage the balance. Like your chip design, if we talk about the performance, if we want to do the reduce number of gate and reduce number of power. So the current AI technology, either it can reduce the number of gates or it can reduce the power. Multiple factors की हम बात करें, multiple performance factor की बात करें, तो यहाँ पर एक फेल हो जाता है. So the best way कि AI and human जब साथ साथ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है. ओके, तो इसको हम यही स्टॉप करते हैं. फर्दर और कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क. Okay, thank you. Hello. Good evening, everyone. Now again we reach at the same point. Session is going to end or already end because sir asked about doubts, but no one is asking. I think no query, no doubts. And actually, sir summarized the session. Whatever we did in all the 4 days, from day first onwards to today, till today. Whatever people delivered these 3 days, today sir actually summarize all the things. First day we discussed about CM Roy sir about new technologies, emerging technologies about semiconductors. He delivered in that way. First day was over. Second day, Sachin sir came and he discussed about the fabrication part. Both the sessions, fabrication completed. Sir discussed about semiconductor technology about Puran sir. That was also half session related to that one only. Second day over. Third day about packaging and all discussed by Piyush Jain sir. That was also wonderful session. Then one more session about AI driven based yesterday that Dr. Patel, Raju Patel sir came and he delivered about that. So I think all these 3-4 sessions can summarize what we learned in these 3 days. 4th day, sir has done all the, he collected all the things. So I think today doubt should be there because if people are learning all these 3 days means something is there. But no one is asking, so it's really a wonderful or maybe what. Could you please give a big clap for sir? And thank you sir from our side. You came and you have given your time to us. And mainly sir is focusing about, sir is actually MD of one of the research India, one of the company is running here and the company also situated in Patel Nagar. So I think whoever is interested to publish papers, or patent and all such type of things, sir is already handling such type of things. So I am telling to all and requesting to all, if you are interested, please go through and discuss with us, then we can, actually we will sign one MOU also with sir. For such type of things we want in our college, publications and all.
So thank you very much sir, you delivered very nicely. Thank you sir, thank you.